Okay, let's start, guys. Yogesh bhai, where do you stay? I think Yogesh's mic is not connected. Aki bhai, where do you stay? I'm in my hometown, Soul bhai, Belgaum. अच्छा बेलगाम में अभी आप फिलहाल. Work from home चल रहा है. Okay. ठीक है, I'll see whoever is in Pune और जो नियर बाय है अकॉर्डिंगली I'll see कि वहाँ का कोई नियर बाय ये मिलता है एक फिजिकल क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए कोई अगर कोई क्लासरूम वगैरह किसी का ऑफिस कुछ ऐसे मिलता है, विल कंडक्ट इट देयर. इफ नॉट विल हैव टू डू इट हियर इन विमान नगर. जो भी बच्चा हुआ है वो भी ऑफलाइन होगा क्लासेस. Is that what you're talking? नहीं नहीं, not we'll do the online also, okay, just for people who Okay. want to come offline to them. Okay. Okay, Yogesh has joined. I think his mic. Yogesh, are you able to hear it? Yes, well, bhai. Yes. Okay, so let's start. Right, sorry, Amit, you're asking something. So this machine, it doesn't have ASR, right? So if you reprotect it, इसको reprotect कर दोगे ना आप, तो जो sync होता रहेगा. वैसे भी see, understand one thing, अमित, नाम वगैरह से बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. अगर इतना ऑटोमेशन हर चीज में हो जाएगा ना, सो ट्रस्ट में हम लोग अपना जॉब वैसे ही ये कर देंगे. सो नो मैटर कि लोग कितना बोलते हैं ऑटोमेशन हो गया, ये सब हो गया. नाउ इफ इट इज हियर, नाउ डिपेंड्स कि आपका प्लान कैसा है, कि आपके एप्लीकेशन का प्लान ऐसा है कि फॉरएवर इसी पे चलाना है. अब एक बार ठीक है, डिजास्टर रिकवरी हो गया, आई डोंट वांट टू गो बैक टू दिस, मैं इसी पे चलाऊंगा. देन यू विल डू द रीनेमिंग वगैरह, इसका फिर से आप लोगों के पास टास्क आएगा. मे बी नॉट यू गाइस, इस टाइम पे वो सपोर्ट के पास जाएगा इस तरह के टास्क. ठीक है, ये सारे टास्क सपोर्ट के पास जाते हैं कि ठीक है इसको रीनेम कर दो, पहले जैसा था एग्जैक्टली वैसे कर दो, इसको हम अभी एक्चुअल वाला बना रहे हैं. और इफ यू थिंक दे श्योरली नो कि यार ये सिर्फ 6 घंटे के लिए डाउन हुआ है, अप होगा, देन फॉर दोस 6 आवर्स आई डू नॉट वांट टू मेक एनी चेंजेस हियर. तो उसके बाद मैं इसी पे जो है पूरा ये कर लूंगा. इसमें रीपॉइंट नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि आईपी तो सेम ही होगा. हाँ, रीपॉइंट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आपका आईपी वगैरह सब कुछ सेम होगा. डीएनएस एंट्रीज भी जो है वही चलेगी आपकी. ठीक है, इज इट क्लियर? लगता है वो पब्लिक आईपी ये करना पड़ेगा. We do not use public IP at all, Kumil. Public IP सिर्फ classes तक है, so I can let you know if I use private IPs, if I start using private IPs, you guys will not be able to check anything. अगर मैं private IP पे बनाकर आपको वेबसाइट बोल दूं और ये बोलूं कि चेक करो वेबसाइट चल रही है या नहीं, how will you check? या तो फिर मुझको हमेशा से एक VPN बनाना पड़ेगा, आप लोगों को हर क्लास से पहले उस VPN पे कनेक्ट होना पड़ेगा, and we are in one network and then we can do it, which doesn't make any sense, at least for our classes. But in offices, obviously वो हमेशा एक ही नेटवर्क में होंगे, वो सब करके ही रखा होगा. So private IP, if you see 10.0.0.4, इसका भी 10.0.0.4, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि it is implied that if you are doing a failover, not a test failover, if you are doing a failover, so it is implied that your original machine, original network is down. That is the concept behind it. इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट का ये नहीं है. Clear? And same applies for private endpoint as well. Private endpoint, when we discuss, we'll do that. नहीं, private endpoints का ऐसा कुछ नहीं है by the way. Private endpoint एक completely अलग topic है. From where did you read private endpoint का ऐसे? Private endpoint is nothing. This is my storage. ठीक है? Storage कैसे access करते हैं हम? अच्छा, स्टोरेज. सो अगर हमने वर्चुअल नेटवर्क के लिए प्राइवेट एंडपॉइंट लगाया या वीएम वगैरह के लिए. नहीं, are you talking about private endpoint? Are you sure? ठीक है. What do you mean by private endpoint? नहीं, you can ask. It's okay. Is this the private endpoint you're talking about? Yes. Because we never covered this. Yeah, we never covered. Right. Is this the private endpoint you're talking about? Yes, right. ठीक है. I think I might. This we use when we have to use storage only internally. अभी अगर मैंने storage बनाया तो there is only a way that I can use it externally. ठीक है, अगर मैं cloud से भी request आ रहा है, let's say cloud के भी किसी Azure से machine से request आ रहा है ना storage access करने का, so it goes like this. internet पे जाता है request and then, हालांकि दोनों same cloud में है, so I do not want to use internet. If I want to use directly from here to here,
this is the place where we use endpoint. We'll cover the endpoint, don't worry. Okay. So coming back to the site recovery, today we are about to finish site recovery. Yes, one thing I asked you or I explained it to you guys. Do you remember? Do you want me to create that diagram again? Let's say this is one app. Okay, some to run this app, because the app is heavier, you required multiple servers and you required multiple tiers also. It's a 3-tier app. Okay, let's say 50 servers are here. Front end, 50 servers are here. Back end, 50 servers are here. Database. Now we are doing a planning. We are doing a disaster recovery for this app. Right? तो आपको ये पूरे 150 सर्वर का disaster recovery करना होगा. Plus you will have to create a plan. Otherwise आप एक एक मशीन को अप करोगे, it is not going to help. इस सारे मशीन अप करने में 6 घंटे लग जाएगा, उसमें तो आपका दूसरा साइड अप हो जाएगा. Right? Plus if you do all 150 machines at a time, it is not going to help. Why? क्योंकि इसमें कुछ डेटाबेस सर्वर्स हो गए और कुछ फ्रंट एंड सर्वर्स हो गए. फ्रंट एंड सर्वर पहले अप हो जाएंगे, सो दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर बैक एंड डेटाबेस सर्वर्स. और डेटाबेस सर्वर या बैक एंड सर्वर अब तक अप हुए ही नहीं है, तो एरर्स आने शुरू हो जाएंगे. प्लस फ्रंट एंड सर्वर अप होते ही यूजर्स उसको कनेक्ट करना शुरू कर देंगे. रिक्वेस्ट डाउन होगी, डेटा ड्रॉप होगा, ब्लंडर हो जाएगा पूरा. आर यू गाइस गेटिंग इट? So I'll have to make sure that I bring up the database servers first. Then I bring up the backend server. So my backend servers, when they want to connect to the database, जब भी वो अपना credentials वगैरह ये करे, so database server up होगा उसके लिए. Now this is up, ये up हो गया, इसको सारे credentials भी मिल गए, सब कुछ है, these are connected. Now I will bring up the front end servers, and now front end server will connect to backend server. So this is how we can do it smoothly. But to do this, what option do we have? So yesterday I told you we have recovery plans. So today we'll talk about recovery plans. Site recovery plan. Concept is similar, only one thing I am adding here. It's how to do it with the multiple servers. So I'll create a recovery plan. Let's say that I'll name it prod server or front end servers. Front end servers. Okay, front end servers. Source, what is the source? Why do you think it is giving me only 3 source? Only 3 region? I am creating a recovery plan. Why is it giving me only 3 regions? Why do you think it's giving me only 3 regions? We have machines in these 3 regions. Exactly. We have Right now we have it in 3 regions. Yeah. yes. Right, got it. So because we have these machines only here, guys, give me a minute. सोर्सेस जहां पर हमारे सर्वर्स ये हुए हैं, इसलिए इस तरह से. सो ईस्ट यूएस, जो ईस्ट यूएस से जितने सर्वर्स आ रहे हैं, टारगेट वेस्ट यूएस में जितने हैं. विल ऑलवेज यूज रिसोर्स मैनेजर. क्लासिक ना हम सीख रहे हैं ना हम लोग ये करेंगे. Here I will have to select the machines. Now we have only one machine, so I'll only select one. Example के लिए यहाँ पर अगर आपके 150 मशीन होते ना, so here you would have selected those 50 machines. टाइप से और किसी तरह से आपको ये मिल जाता था, मतलब लिटरली इसको एक एक नहीं करना पड़ता, इसकी भी स्क्रिप्ट आती है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2000 सर्वर से, you don't have to do it one by one, but you need to understand the you need to understand this, what do you say, the concept. You need to understand the concept. Are you guys getting it? What is the plan and what is it? Yes.
So you need to understand that. You'll have to select all servers here and create it, and just create. That's all. इसमें बहुत आगे कुछ टेक्निकल नहीं है, अपने आप कुछ नहीं होने वाला, इसमें मैनुअल वर्क है. Failover is always a manual work, but the only difference here is when you guys practice, even if it is a single machine, make sure you practice with a recovery plan so you will understand it. So now here it is. See, हमको पता चल गया कि ये है what we were doing earlier. हम virtual machine पे जा रहे थे, and then we were virtual machine पे जाकर मैं यहाँ पर virtual machine पे जाता था, and then I was performing failover or test failover, whatever. Now what I'm saying, you don't have to go there, and because that is not useful for me. I have 150 machines. आप एक एक पे जाकर कब करोगे? Create a plan 50-50 के इसमें ये करो. Now I know कि front end के 50 servers इसमें है. So the moment I click here and do a test failover or a failover, it will start a failover on those 50 machines at a time. Protecting those 50 machines, committing those 50 machines, and cleaning up the test failover for those 50 machines. And let's say I do not have a 3 tier वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, single tier है, but still there are 100 machines. So instead of going to each machine, I can create a plan पूरे के पूरे machines में, or within a click, with one click, I can do the failover for those 100 machines. Are you guys getting it? Yeah, understood. Any doubt anyone has? So basically, I think this is what every company would have. So, as in, instead of having one, they would always have these Even if groups. you have, understand one thing, guys. In infrastructure or Azure or anywhere, infrastructure maybe people who are from infrastructure background, system admin वगैरह, they will understand. Let's say that this is my application, ठीक है, इस application पे access देना है किसी को. Let's say that I have a new cloud team, और कोई भी sales team, forget cloud, don't, I'm not even making you confused. Sales team का access देना है, ठीक है. So there are two ways. In my active directory, I have users like, let's say, okay, these are the users we have. Now I'm saying out of these, two are salesperson, Kumail and Yogesh. So give access to Kumail and Yogesh to this sales folder or sales server, whatever it is. So this is one method. Another method is, which is always preferred and every company follow it, that I will create a group naming sales group. I will give access this one to sales group, and I will add Kumail here. I will add Yogesh here. Tomorrow, if a new member comes, I'll add him. If Amit comes, I'll add him. If someone goes, I'll remove him from here. Are you getting it? So the approach is we do not add anything directly. This is the identity and access management approach. Did you guys understand this example? And this is not only Yes, sir. example, you can mention it in your interview also. I'll show it to you कि हमारे कब काम में आता है यहाँ पर. By the way, did you guys understand it? What is the approach? Yeah. Yeah, Never give so it directly. Always have a group. to Always, manage it. even if let's say ये सारे होते नहीं, अगर सिर्फ initially I'm saying कि sales division पुणे का जो है, we are just starting with 1% Kumail, वही अपना reporting है, वही manager है, वही field वाला बंदा है, सब कुछ वही है. Still, I will not give access directly to Kumail. I will always go through the security group or any group. Why? Tomorrow, if someone, if there is an addition, तो मेरा काम डबल नहीं होना चाहिए. किसी को निकालना हो तो ये सब नहीं होना चाहिए. सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लस इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर सेल्स को मैंने कुमेल को ऐड कर लिया, आईटी से योगेश को ऐड कर लिया, एचआर से सृष्टि को ऐड कर लिया, XYZ इतने सारे लोगों से सब लोगों को ऐड कर लिया. तो यहाँ पर मुझको समझ में भी नहीं आएगा कौन कहाँ से है. गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट.
Okay, so we will not add here. This is the approach for identity access management. Similar approach we will have here. We'll have it here. Even if you have one server, you will always create a recovery plan. Not only in training, मैं सिर्फ training की बात नहीं कर रहा हूँ. Actual में भी अगर एक भी होता है ना, they will always create a recovery plan. क्यों? Why do you think they will create a recovery plan? Tomorrow if we add a new server, कोई एक और server को हम add करते हैं उसमें recovery वाली list में, right? So we can add them. यहाँ पर group में हम add कर सकते हैं. यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें ये देखने मिलती है. Here you can come and you can see. You can add few more options that add protected items, pre action, post action क्या होना चाहिए. दो चार चीजें इसमें मतलब इंडिविजुअल से अलग ज्यादा कर सकते हो. ठीक है, कोई स्क्रिप्ट रन करनी है आपको, कोई मैनुअल ये करना है, यू कैन रन अ स्क्रिप्ट ऑल्सो. इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ये ग्रुप होने के बाद ये ग्रुप हो जाए, ये ग्रुप होने के बाद ये हो. देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू. इसमें भी जो है आप अपने इस प्लान में मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट इन डिटेल, राइट. आई एम नॉट डूइंग दैट क्योंकि ये आपको इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला है कोई. and I don't want you to have extra information unnecessary का. All group shut down one machine. सी यहाँ पर आप जो है डिसाइड भी कर सकते हो कि किस ग्रुप को किस रेंज में जाना है. ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. करना तो टेस्ट फेलोवर आपको मैन्युअली ही है. हाँ, लेकिन इसमें आप बहुत सारे ग्रुप स्क्रिप्टिंग वगैरह इतना लगा सकते हो कि विद इन अ सिंगल क्लिक यू कैन अचीव मेनी थिंग्स. जो आप मैन्युअली करने बैठ जाओगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा. ठीक है, मैनुअल 50 मशीन अप करके उसके बाद दूसरे ग्रुप को अप करना है. इससे अच्छा आप एक स्क्रिप्ट लगा दो, एक क्लिक कर दो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा कि पहले ये ग्रुप अप होगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप अप होगा, तीसरा ये होगा. ऑल दीज थिंग्स यू कैन अचीव व्हेन यू गो टू रिसाइकल रिकवरी प्लान. सो जस्ट रिमेंबर रिकवरी प्लान. दो चार इसके बारे में थोड़े बहुत इसके ये याद रख लो आप कि इसके फायदे क्या है, अलग चीज क्या है, व्हाई विल वी हैव अ रिकवरी प्लान. उतना सब याद करो एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू. Is it clear? Anyone has any doubt? So how much अगर manually करते हैं हम, so how much time it takes for the system to be up? अगर Usually 3 से 4 मिनट लगता है. But it's not about system. Manually you can have these many tabs. ठीक है, आप यहाँ से you don't have to wait कि पहला सिस्टम आपका अप हो जाए. उसको फेल ओवर क्लिक करके you can go to the next one. वो अपने टाइम से अप होता रहेगा. It's human efforts. आप कितना फास्ट कर सकते हो. एक को फेल ओवर क्लिक वगैरह करके सब चेक वगैरह करने के बाद आप दूसरी मशीन पे जाओगे, 5 मिनट्स तो लगेगा, एटलीस्ट 3 मिनट्स तो लगेगा, राइट. यू चेक ईच एंड एवरी सर्वर. इंडिविजुअल करने में जब जहां आपके पास 150 सर्वर है, 150 में से आपको जो है 50 डेटाबेस के सर्वर करने हैं. नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक एप्लीकेशन के नाम जो है बहुत सिमिलर होते हैं सर्वर्स के. Tsoft VM 001 002 004 53 से लेके 150 तक होंगे. मे भी बीच में कहीं DB वगैरह एक छोटा सा लिख दिया होगा. इट कंफ्यूजेस यू. आप लोगों को सर्वर 005 करना था DB का, आपने फ्रंट एंड का कर दिया. मतलब ह्यूमन एरर का स्कोप होता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग का स्कोप होता है. मैंने ग्रुप बना दिया अगर एक बार, तो इज देयर एनी एरर? अगर द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, इसके बाद कोई स्कोप ही नहीं एरर होने का. बाय डिफॉल्ट इसमें जो 50 सर्वर है वही होंगे, इसके अलावा कोई स्कोप है ही नहीं. Are you getting the point? yes, कि जब मैन्युअल यहाँ जब तक से एक और दो सर्वर्स दिखते हैं ना, सो वी आर नॉट एबल टू इमेजिन दिस. हम उस एरर को और उस स्कोप को इमेजिन नहीं कर पा रहे. यू आर सेइंग कि यार दो ही तो सर्वर है, मैं वहां से जाऊं या यहाँ से करूं. बट नाउ इमेजिन दैट यू हैव 1000 सर्वर्स हियर, और इतने सिमिलर नेम होते हैं ना उसके, दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इजीली. तो आप उसको ढूंढने में ही 2 मिनट लगा दोगे. फिर भी स्कोप है कि आप शायद कुछ गलत कर दो, राइट. So to avoid all those situations, we have a recovery plan. Yes, guys, anyone has any issues, anything which they did not understand? We're done with the recovery. We're done with the backup. We are done with this replication. I'm about to delete all of this. Before that, I'm going to disable the soft delete option. Anyone has any questions, please let me know. And I'm leaving many options, right? But don't, so
डू नॉट वरी अबाउट देम के बाद में इसको जाके आपको सीखना है आपके नॉलेज के लिए, इट्स वेल एंड गुड, लाइक दिस ऑप्शन, इसको मैंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, आई एम नॉट लिविंग, आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग, बिकॉज इतने हमने 25-30 इंटरव्यूज में, इवन इंटरव्यूज व्हिच वी टेक, आई टेक, हमने इतने डिटेल में कभी जाके पूछा ही नहीं। सॉफ्ट डिलीट इज वन ऑफ द फीचर्स, ठीक, इसलिए इसको पूछते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स में जाके इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। सो स्टिल इफ यू वांट टू लर्न यू कैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन स्टिक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। सॉरी सृष्टि, यू आर आस्किंग समथिंग। Yeah, I remember that day there was one VM we have to delete of Kumail's. Hmm. Yeah, so we are not able to delete that. Actually, showing that it's unmutable or something, and the retain thing, but we are not able to Okay, figure well, out. yes, we'll see that. It's a storage account. गॉट इट। Yeah, sorry, इमेट का storage. ऑप्शन उसी में है, रेप्लिकेशन में इमेट वाला ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट डिलीटिंग दिस एंड लेट्स सी हाउ इट So वर्क्स। just while you're deleting that, when you disable that soft delete, was it enabled automatically or Ah. it was enabled automatically? राइट Okay. राइट। सो फर्स्ट थिंग आई सी बैकअप, आई वांट, अल्टीमेट एम इज टू डिलीट माय रिकवरी वॉल्ट। रिकवरी वॉल्ट डिलीट करने से पहले मुझको बैकअप भी तो देखना पड़ेगा कि बैकअप में कुछ है क्या। सो डू आई हैव सम एनीथिंग इन बैकअप? नो। ओके, बैकअप क्लीन है, रेप्लिकेटेड। ओके, आई हैव वन, आई वांट टू, आई हैव टू, इसका भी हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया था, फेल ओवर कमिटेड, सो आई हैव टू स्टॉप देम फर्स्ट। अगेन अगर आपको बहुत सारे एक साथ करने हैं, डिसेबल वगैरह करना है, सो यू डोंट हैव टू डू वन बाय वन, स्क्रिप्ट आती है इसकी भी। First thing I will remove the replicated. See, it is already removing the replicated item. The moment I click on disable replication, it is removing the replicated item. I'll see what is the status with the next one. Yeah, let's see. Hopefully we will be able to delete it. Not sure. कोई ना कोई एरर कहीं ना कहीं से कुछ आ ही जाता है, but still we will see. Otherwise, this one I have shown. Did you guys try this, by the way? Delete using PowerShell script. Srishti, Kumail, did you guys try this? You had to. This is recovery service world. No, but that option is उसमें not भी there in आता the storage. है. There's- I couldn't find it. Do we Yeah, have I a was different? able to find, but I didn't try that. Do we have a different service vault for storage, for backup? Are you guys talking about a backup or what? Storage account are you not able No, to I'm delete? talking about Storage storage account. account. Storage Storage account. account. Okay. And, No, in storage account account, में I don't again, think so. You'll get it in storage account. We'll see. First, let me delete this one. We'll go to that also. We have sufficient time today. Yes. Meanwhile, anyone has any questions, please let me know, guys.
So जब तक ये run हो रहा है, so I tried ASR for site recovery. ठीक है, तो उसमें it creates one more resource group. ठीक है, so उसमें मुझे scope का error आ रहा था. ऐसा है क्या, क्या we cannot create one more resource group under my name or something? नहीं The नहीं, ASR जो resource group create होता है. got it, good you brought it up. आप लोगों को रिसोर्स ग्रुप बनाने का ये नहीं होगा. रिसोर्स ग्रुप बन गया आपका या नहीं बना? बनने वही था, जब सेलेक्ट करने बोलते हैं ना तभी एरर दे रहा है स्कोप का. I'll tell you. This is my subscription. This is my subscription. These are the resource groups, right? Johi, Kumail, Amit, Yogesh, etc., etc. These are the resource groups. You are owners for your respective resource group. You're not the owner for subscription. To create a resource group, you should be an owner or an administrator or something on this subscription level. That is the reason. Are you getting it? You are the owner here. आप owner हो इस level पे. So anything within this resource group you can create, like a new virtual machine, new VNet, anything and everything. But when it comes to creating a new resource group जो है आपके scope से बाहर हो जाता है. Resource group subscription के resource में आ रहा है. So someone who has admin access here, only that person will be able to create a new resource group. So if we try ASR, it won't work, right? It won't, right? I'll have to change your accesses. Is it clear? Anyone else has any questions? Kumail is, I think I'm not able to switch to your directory. I am already there, I guess. Yeah. Okay. Which storage account? PS test 3x1. Migration? No, the one below that. PS test. This one. Is it? Did you Hmm. create this? Yeah, I had created long time ago. Remember once we had created this and we had kept all the settings on, then we were going to delete it with PowerShell, but then that option only was not over. It's only for that backup vault, recovery vault. So after that, I'm not able to delete this only. I performed 2-3 migrations also on this. Mhm. After that, I was not able to delete it only. Okay, we'll come to this. First, let's see if this has been deleted. So see, recovery vault is gone. One thing, what do you think has happened to the new machine which was created or new resource group? वो सब इसके साथ delete हो गए या नहीं? What do you think? It won't. There was an error also. If you guys, I'm not sure if you guys read it or not. That the resources which were created, those won't be deleted. So you'll have to do that manually. I mean, doesn't even make sense, right? कि मैंने नया बना दिया, ठीक है, I want to close the replication, but जो resource बन गए हैं, उसको इसके साथ delete नहीं होगा. So I'm deleting this one also. I'm deleting this one also. Yeah, currently I'm in Pune.
Yes, guys, while I'm looking into this, anyone has any questions, please let me know. I'll try to delete this and then I'll maybe get an error and I'll come to know कि किस पे लगा हुआ है वो mute वाला option. Yes, meanwhile. Yes, Yogesh, ask. ये मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस, कल मैंने जब वो एटीडन को अप्लाई किया तो उनका एचआर का कॉल आया. जस्ट वन क्वेश्चन दे आस्क्ड, डू यू नो अबाउट क्लाउड सिक्योरिटी? Okay. मैंने नहीं बोल दिया. So what do you understand by cloud security? What comes under cloud security? आई थिंक वही फायरवॉल रिलेटेड होगा या फिर डिफेंडर, एंटीवायरस, उस टाइप में. So you should have said yes. बोल सकते थे कि भाई when it comes to network security, ठीक है, firewall हमने किया नहीं, firewall को हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आपका जो है what is it, NSG जो है वो एक सिक्योरिटी का हिस्सा है, आपका VNet जो है वो एक सिक्योरिटी का हिस्सा है कि किस तरह से आप सेग्रीगेट करके रखते हो. हाँ, लेकिन कोर सिक्योरिटी का रोल है तो ठीक है, we haven't done the study for that. हम लोग इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटर वाले पार्ट इस पे है, ठीक है. चले. बट यू कैन डू दिस. हाँ, बोल सकते हो, ऐसे कोई खास इशू नहीं है. क्या आई एम ट्राइंग टू डिलीट दिस, लेट मी गेट द एरर मैसेज के एरर क्या आता है. एक और चीज असल जो तुम एक बार मुझे भी शेयर किया था, तो उसमें जेडी में उन्होंने ये पूछा था कि टेराफॉर्म का कितना एक्सपीरियंस है, एज वेल एज डॉटनेट का कुछ एक्सपीरियंस है. डॉटनेट तो स्ट्रेट अवे नो. डॉटनेट पे तो ये भी मत करो आप लोग, डिस्कशन भी नहीं करना है कुछ, स्ट्रेट अवे नो. डॉटनेट अगर कोई पूछता है तो वो अलग ही रोल है. टेराफॉर्म हम थोड़ा बहुत कर लेंगे. टेराफॉर्म इट्स नॉट अ बिग डील. टेराफॉर्म जो है क्यू हब वगैरह वो सब नहीं बोलना, क्योंकि वो तो डिप्लॉयमेंट में आता है, ये नहीं. सी टेराफॉर्म जो है, दिस इज हाउ यू कैन रन टेराफॉर्म. टेराफॉर्म कुछ नहीं है, जिस तरह की जो मैंने पार्सल स्क्रिप्ट दी थी आपको, डू यू रिमेंबर, एक पार्सल स्क्रिप्ट दी थी कि आप अपना ये चेक करो, सब मशीन वगैरह बनाकर चेक कर लो. डिड यू गाइस डू दैट? डायरेक्टली पावर्शेल पे से किया था ना, पावर्शेल पे किया था ना आप लोगों ने वो. Did you do it? Do you remember something out of it? You did Yes, it, right? Or you didn't? Yes. Similarly, you come to Terraform, you come here और यहाँ पे जो है ना ये बस थोड़े बहुत कमांड्स चेंज हो गए, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाएगी, बट और अल्टीमेटली यहाँ पर भी यूज पावरशेल ही होता है. टेराफॉर्म भी जो है पावरशेल के थ्रू ही चलता है. So you just need to understand the logic. And again, when they ask, can you write scripts on Terraform? No, I cannot. वो तो आप PowerShell पे भी नहीं लिख सकते हो. But you give me the script, I can read it, I can manipulate it, I can change it, I can reuse the old scripts, I can deploy the new servers using Terraform. ये हम बोलने वाले हैं. We'll do it. Terraform से भी एक दो machines में आपको launch करके बता दूंगा. It is not a big deal, so don't be afraid of Terraform. We're still looking at that. That is being deleted. Let's see if okay, I think this has done. I'll stop the machine. From tomorrow, anyone is using this subscription, be mindful of it, okay? Because we'll have many people and they will be using many services. So as soon as you are done with it, make sure to turn them off. This month we had enough balance because initial days में हमने practice नहीं की, so we had enough balance for this. But next month we will be practicing, so we won't have that liberty. I'll look into this, guys. Whatever the error is, Shrishti and Kumel, I'll let you know. But mostly, Okay. मुझको जब वो check करना है कि immute किस container पे लगा हुआ है, and we'll go there and we'll remove that immute. Legal immute होता है, बहुत सारी चीज होती है. One question, guys, that if I do not know, if I know the this one, let's say storage account's name. Okay, I know this storage account name. I want to recover it. How will I do it? Anyone knows? I want to recover the storage account. I just know the name. Let me delete one first. Let's see if I can delete this one. Sorry, I'm back. Kumail, interviews there, huh? So there's this company called SA Technologies. I don't know if you have heard, and their client is Toll.
and they have a requirement for same again migration, only pure migration. It's good. ले लो JD वगैरह लो, हम I hope इनमें से ही कई लोग अप्लाई कर देंगे, माइग्रेशन वगैरह को हम करते हैं जल्दी कंप्लीट. Yeah, See, Thursday guys. को उसका interview कर रहे हैं वो लोग. So हाँ, I do was it. thinking I'll come Take to your house questions. so that we can record it. Why not? चलेगा. So there was a storage account, guys, with this name. I deleted that. Now I want to recover that. Okay, from storage account, if we delete something, we can recover it from soft delete. Understand the question well. From the storage account, if I delete something here, something from here, so I can go ahead and show the deleted items, show the deleted containers, and I do get an option here to undelete, right? Do you remember this undelete वाला option? याद है हम लोगों ने किया भी था. Yes. But my question here is, I have deleted a storage account, completely a storage account. How do I recover that? We have a restore option सामने ही है. Where is it? Create के बाजू में. Restore. Here it is. Can you see? This was the name. Did you guys get it? Completely storage account अगर कोई delete करता है, वैसे इतने level का access किसी को होता नहीं है. In case कोई blunder हो गया, so you come here, you click on restore, you select the subscription and you select that deleted storage account. Last 14 days के accounts इसमें दिखेंगे. Now we deleted only one. तो ये दिख रहा है कि ये कब delete किया गया था, कब create किया गया था. It was created on 2nd of August and today we deleted that. So if I want, I can restore it. Yeah. Okay guys, less than a minute is remaining. We'll stop the session. And once I figure it out, इसमें किस वाले पे issue था and what did I do, I'll let you know guys, Srishti and Kumel. Okay. Okay. Thank you, sir. See you guys.